Achha, is the screen visible? Yes, yes, sir. All right. So we're just going to go over this concept of derived units. Jaldi se. You guys know what base units are? Base quantities or base units? No. Okay. So सबसे पहले हम देखते हैं कि base quantities क्या चीज होती हैं. Base quantities, basically all those quantities that exist in their, you could say, most initial form, and they're not made up of any other physical quantities. For example, time, distance, temperature, current, have their own units. They're the base quantities, and they do not really have certain formulas to construct to make these quantities. Time unit is seconds, distance is meters, temperature is in degree kelvins, current is in amperes. All right. So these similarly mass is in kilograms, kgs. So these quantities and moles as well. These quantities are known as base quantities because they exist in their original forms. Now, when you use one, two or more base quantities to come up with further more quantities, they're known as derived quantities and derived units of those quantities. For instance, velocity. Velocity is distance per unit time. Distance and time are both base quantities. Velocity is a derived quantity. Why? Because you're using two base quantities to derive a third quantity. Okay? Similarly, momentum. Momentum is mass times velocity, mv. It is also a derived quantity. Energy. Energy is half mv square, kinetic energy. Potential energy is mgh. So these are all the, you could say, the derived quantities from the base quantities. Okay. Units. Now, once you come up with a derived quantity, you can also derive the units. For instance, speed is distance per unit time. Distance is meters, time is seconds. The unit of speed is meter per seconds. Okay. Energy is half mv square. You ignore all the constants, okay? Half को हम ignore कर देंगे. Mass is kg, velocity is ms minus 1 का whole square ऊपर आ जाएगा. You expand this, kg m2s negative 2. Guys, are you getting me? ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है. तो ये आपको क्वांटिटीज को डिराइव करना और फिर उनके यूनिट्स को डिराइव करना आना चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. आपकी पूरी अब एएस की फिजिक्स में साथ चलेगा आपके. ठीक है. अच्छा, इसी में अब हम ये देखते हैं कि लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स. प्रेशर is force over area. Force is mass times acceleration. अब इसमें से mass is a base quantity, acceleration is a derived quantity. तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें acceleration को derive करना होगा. Acceleration का फॉर्मूला होता है velocity over time, यानी velocity का change of velocity over time. Velocity is ms minus 1, time is seconds. So you can apply the rule of indices. Seconds minus 1 over seconds is seconds negative 2. So ms minus 2 is the answer. Now what you're going to do is you're going to use this acceleration unit with mass to come up with force. Mass है kg, acceleration है ms minus 2. तो force का unit हमें क्या मिल गया? kg ms minus 2. You're going to use this unit of force इस formula में to get the pressure. So kg ms minus 2 over area. Area का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. आ गया. तो अब प्रेशर के लिए आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. देखें m और m, m1 है और m2 है, तो ये हो जाएगा m1 minus 2 जो कि बन जाएगा m negative 1. तो kg m negative 1 seconds minus 2. This is the unit of pressure. All right. Guys, is it clear?
Yes. ओके अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो just stop me there and then और वहीं पे मुझसे क्वेश्चंस कर लें क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट कि यूनिट्स वाली चीज हमें अभी क्लियर हो ओके ऑलराइट इसी तरह से लेट्स डू अनदर एग्जांपल हम डिराइव करते हैं यूनिट अब एनर्जी का कर लेते हैं एनर्जी इज mgh mass gravity into height so potential energy what is gravity gravity का यूनिट होगा ग्रेविटी का क्या यूनिट होगा एनी आइडिया 9.18. 9.18 तो 9.18. ग्रेविटी की वैल्यू हो गई ना उसके साथ यूनिट क्या लिखते हैं ms minus 2 राइट ये यूनिट होता है ये एक्सेलरेशन की भी सेम यूनिट है क्योंकि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल होती है बेसिकली the unit of gravity is same as the unit of acceleration okay why is that so because gravity is acceleration of free fall and acceleration of free fall we've already figured out the unit of acceleration that is velocity over time ms minus 1 over seconds so you come up with ms negative 2 yani ms minus 1 over seconds is equal to ms minus 2 the unit of gravity is also the unit of acceleration because they're the same things mass is kgs gravity is ms minus 2 height is meters so kg meters into meters is meter square seconds negative 2 ये समझ आए कि this is how we calculate the unit of energy okay moving on derived units are derived from the 7 SI base units the base units of physical quantities such as newtons joules pascals can be deduced to deduce the base units it is necessary to use the definition of the quantity the newton for example force mass times acceleration yahan pe so if you guys look at your screens mass times acceleration ये भी हमने किया है mass is kgs acceleration is ms negative 2 so this is the unit of force kg ms minus 2 so newton is basically the unit of force लेकिन जो SI बेस यूनिट है वो ये है हमने अक्सर क्वांटिटीज को SI यूनिट्स में लिखना होता है सिस्टम इंटरनेशनल के जो यूनिट्स होते हैं राइट न्यूटन हम फोर्स का न्यूटन यूज करते हैं लेकिन न्यूटन इज नॉट एन SI यूनिट SI यूनिट सिर्फ वो यूनिट्स होते हैं जिनमें या तो केजी हो मीटर हो सेकेंड्स हो या एम्पियर हो करंट के लिए दैट्स इट एनर्जी इज हाफ मास टाइम्स वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी हाफ इग्नोर कर देंगे मास इज केजीज velocity का स्क्वायर इज ms negative 1 whole square so kg meter square seconds minus 2 देखें this is energy हमने भी यही एनर्जी यहाँ फाइंड की हुई थी अपने उसमें अभी जो हमने पोटेंशियल एनर्जी से फाइंड किया okay pressure is force over area force is newtons over meter square newton हमने यहाँ फाइंड कर लिया था kg ms minus 2 divided by meter square answer is kg m negative 1 is minus 2 so I'm assuming this is all clear to you now we're moving on to this new concept known as homogeneity of physical equations what do you understand by this word homogeneity or homogeneous equations any idea so homogeneous equations are basically those equations that have all of the quantities in same units when all the units in an equation are the same
In equations, we also call these equations dimensionally consistent. Dimensionally consistent equations. Equations having units in the equations having all of the units as same are known as homogeneous equations. For instance, if I write down this equation, V is equal to U plus AD. Acha, let's figure this out. Velocity is what? It is meters seconds -1. ये जो U है ये भी velocity है, ठीक है? तो ms -1. Acceleration is ms -2 multiplied by time is seconds. So if you solve this equation now, ms -1 as it is, ms -1 as it is, plus if you solve this, seconds -2 है और multiplication हो रही है तो +1 ऊपर हो जाएगा, तो seconds -1 आ जाएगा. ms -1. So if you look at this equation, you see v, u, at. All of these three physical quantities have the same units. So this is why it's known as a homogeneous equation, a dimensionally consistent equation. Any questions? No? Okay. अब इस इक्वेशन को यूज कहां करना होता है हमने? ये तुमने पढ़ लिया कि चीज की यूनिट सेम है, लेकिन अब इसका काम क्या है? अननोन यूनिट्स, कांस्टेंट्स की यूनिट्स फाइंड करने के लिए. तो the concept that we're trying to study over here is finding units of constants. We use the concept of homogeneous equations to find unknown units. For example, if I tell you कि v is equal to u plus k, आप मुझे बताएं कि k के क्या units होंगे? So in order to figure out the units of k, you'll plug in the units of v. V is ms -1, u is ms -1. तो आपको पता होगा कि since it's a dimensionally consistent equation, तो k का unit will also be ms -1. Simple as that. So answer will be k ka unit is k ms -1. Okay. इसी तरह से we use another there's another application of homogeneous equations, value of power constants. So we can find values of power constants through the concept of homogeneous equations. For example, if I write down v is equal to avt की power n, and you're asked to find the value of n over here. तो आपको एक चीज पता है कि velocity is ms -1, तो आप लिख लोगे ms -1 इस साइड पे. avt हमें पता है acceleration क्या चीज होती है, ms -2. फिर velocity is ms -1 और time is seconds और इस सब के ऊपर n आ गया. अब क्योंकि ये equation homogeneous है, it's already been told that this is a homogeneous equation. What you can do over here is, first of all, to solve the bracket now, ms -1 written as it is, bracket m square s -2 -1 plus 1 -1 plus 1 खत्म हो गया, s -2 रह गया और ये पावर n है. अच्छा, अब मजे की बात ये कि आपने फाइंड n को करना है. आपको ये नहीं पता कि n क्या चीज है, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे ms -1 है, यहाँ पे m2s -2 है. Now because this is a homogeneous equation and you need to have the units same, so you'll have to perform an operation on this side to make this ms -1. तो मुझे बताओ कि n की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वो इस स्क्वायर और इस -2 को -1 बना दे. जी No idea, guys? अच्छा, बिल्कुल खामोशी, इसका मतलब नहीं समझ आ रहा. ms -1 as it is लिख लेते हैं. अगर मैं आपको ये कहूं कि हम इस 2 और इस 2 को कॉमन ले लें,
n के साथ ले जाए निकाल के, we can do that, right? तो if we take 2's common, पीछे क्या बच जाएगा, m s minus 1 ऊपर 2n हो जाएगा, या अगर ये 2n है, देखो हम लोग पावर्स को इक्वल कर सकते हैं जब बेसेस सेम होती हैं। अब देखो हमने बेस सेम कर दिया है, तो हम पावर हम ये कह सकते हैं इसके ऊपर पावर 1 है, तो हम इन दोनों को करेंगे इग्नोर, 1 is equal to 2n, let's just deal with the exponents, 2 किया divide, n is equal to 1 by 2. Do you guys understand this? जी हसन हुसैन, यस। समझ आ रही है बात? ये 2 डिवाइड क्यों किया इससे? 2 इसलिए डिवाइड किया क्योंकि n के साथ 2 था ना, तो हमने इसको वो करना था, पावर सब्जेक्ट बनाना था। ओके। ठीक है, देखो हमने बेसिस सेम कर लिए हैं, जब आपकी बेसिस सेम हो जाती हैं तो फिर आप एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू x5 लिखा हो, x5n फॉर एग्जाम्पल, तो x निकल गया, 2 इज इक्वल टू 5n लिखा जा सकता है ना, फिर 5 करो डिवाइड दोनों साइड्स पे ताकि n की वैल्यू आ जाए 2/5। तो जब भी बेसिस आपके पास सेम होती हैं, आपकी जो पावर्स होती हैं आप उनको इक्वल कर सकते हो, आप इक्वेट कर सकते हो पावर्स को, ठीक है? तो ओके, सो इसके सर एक और एग्जांपल करा दें, हाँ जी, क्लियर मैं हो एक जाए। और एग्जांपल बता देता हूँ इसका। So we can say that इसके लिए मुझे क्वेश्चन मैं खुद से असल में बना नहीं सकता क्योंकि कहीं यूनिट्स की गड़बड़ आ जाएगी। लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। Okay, for example, write k is equal to b and x. Guys, just hold on for a second. अच्छा, k की हम यूनिट बना देते हैं जी, k और इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर x कर देते हैं, नहीं n ही रख लेते हैं, ठीक है। m स्क्वायर s -1 और -2 इज इक्वल टू b का यूनिट आ रहा है ms-2 टाइम्स मीटर्स। अच्छा, अब इसको देखो जरा, और यहाँ पे हमारे पास n है इस पूरे के ऊपर। तो मैं आपको अगर ये बताऊं कि अब हमने बेसिकली फिगर आउट करना है इस n की वैल्यू, तो m2s-2 एज इट इज आ गया, ms-2 आ गया और m आ गया और इस पूरे के ऊपर आ गया जी n। तो इफ यू गाइस सी कि m2s-2 तो एज इट इज आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, m2s-2 बन गया और ये इसको। तो नाउ इफ यू गाइस नोटिस कि आपकी जो बेसिस है वो सेम हो गई है, m2s-2 m2s-2,
या yes, अब जब बेसिस सेम है तो उनको क्रॉस आउट कर सकते हैं ना। हम ये अज्यूम करे थे इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर पावर 1 होगी, तो n और 1 को हम इक्वेट कर सकते हैं। जब बेसिस निकल गई दरमियान से तो 1 रह गया और यहाँ पे n रह गया, और हम ये कह सकते हैं जी n की वैल्यू 1 है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पावर कांस्टेंट्स का, कि आप यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द बेसिस सेम एंड देन इक्वेट द पावर्स। अभी इसके विल डू मोर क्वेश्चंस एज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बल्कि अब हम मूवी क्वेश्चंस पे करते हैं, जस्ट अ सेकंड। Okay, if you guys look at your screens, first question, easy है. Which of the following is an SI based unit? मुझे बताएं, can you tell me the answer? Which of the following is a base unit? A, A, current. करंट तो एक क्वांटिटी है, यूनिट तो नहीं है. Guys, just give me a second. Okay, guys, so I was asking कि इसमें से which one is an SI based unit? Current तो नहीं हो सकता because current is a quantity. Is gram an SI based unit? Guys, please speak up. हाँ या ना? yes, Yes, is it an SI based unit? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं ना आपको SI based units लिखवा देता हूँ सारे। बस आपने याद रखना है कि जो मैं लिखवा रहा हूँ उसके अलावा कोई और SI based unit नहीं हो सकता, ठीक है। पहली बेस क्वांटिटी है हमारे पास टाइम, और टाइम का यूनिट है सेकंड। दूसरी बेस क्वांटिटी है हमारे पास मास, मास का यूनिट है केजी। तीसरी बेस क्वांटिटी है हमारे पास डिस्टेंस या लेंथ, और उसका यूनिट है मीटर। फिर हमारे पास आता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन। फिर आता है करंट, और करंट का यूनिट है एम्पियर। इसके अलावा कोई भी और चीज आ जाए ना, वो कभी भी बेस क्वांटिटी नहीं हो सकती। ये सारी बेस क्वांटिटीज हैं और ये इनके यूनिट्स हैं, ठीक है। अब ये आपने याद रखना, नंबर 1, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ बेस क्वांटिटी एंड अ बेस यूनिट। क्वांटिटी इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, और यूनिट इज जो जिस यूनिट में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं एसआई बेस यूनिट की टर्म्स में, ओके। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अब अगर आप देखें इस क्वेश्चन को, इसमें करंट क्या है? करंट एसआई बेस क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है। ग्राम कुछ भी नहीं है। केल्विन, यस, केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है। टेम्परेचर इज अ बेस क्वांटिटी, और केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसका आंसर है सी, ठीक है। ये समझ आई बात आपको? yes, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which definition is correct and uses only quantities rather than units? यानी सबसे पहले आपको कुछ definitions given है, you'll have to see सबसे पहले कि definition कौन सी correct है, और फिर कौन सी definition सिर्फ quantities को use करिए units की जगह. यानी quantities, again you need to understand the difference between quantities and units. Density is mass per cubic meter. यानी mass इसका मतलब ये है कि density is mass per cubic meter. Is this correct or not? No, correct. And why is that so? Guys, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी. यूनिट यूज कर रहा है मीटर क्यूब. यूनिट यूज कर रहा है और यहाँ पे एक चीज मैस ने यूज कर ली है. ठीक है, ये गलत है. वॉल्यूम का वॉल्यूम यहाँ पे वी होना चाहिए था. वॉल्यूम मैस मतलब वॉल्यूम का यूनिट नहीं होना चाहिए था, इसलिए गड़बड़ है. Now, potential difference is energy per unit current. Potential difference is energy per unit current. अच्छा, ये मुझे बता, is this correct or not? No. Okay, ये बड़ा कोई unsure सा नो था. पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है वैसे? थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा. वोल्टेज होती है, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी ओवर करंट. पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी ओवर करंट नहीं होता, राइट? अच्छा, फोर्स इज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो डेफिनेशन ही गलत है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज V इज इक्वल टू IR, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस होती है. तो ये तो हम निकाल देते हैं बाहर. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, ये देखें दोनों क्वांटिटीज हैं. फोर्स भी क्वांटिटी है, एरिया भी क्वांटिटी है. दिस इज द करेक्ट आंसर. डू यू गाइस गेट दिस? ये समझ आया? Yes. कि ये डेफिनेशन भी करेक्ट है, इसमें क्वांटिटीज भी लिखी हुई है, कोई यूनिट भी नहीं है, तो इसलिए ये सही है. बाकी सारे आंसर ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं. आखिरी देख लो, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकंड्स. डिस्टेंस ओवर टाइम जरूर होता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम होना चाहिए था. सेकंड उन्होंने यूनिट लिख दिया. तो अगेन दिस इज नॉट राइट. आई होप दिस इज all making sense to you guys. आगे चलें. Yes, sir. Okay, next question. 5 energies are listed below. Starting with the smallest first, what is the order of increasing magnitude of these energies? Okay, guys, do you know the tables? इसमें मिली, माइक्रो, नैनो, पिको वाला होता है, और किलो, मेगा, गीगा, टेरा. नहीं पता तो मैं अभी समझा देता हूँ. No, okay. So we're gonna list down ये हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चीजें लिखते हैं तो ये इनका एक ऑर्डर होता है. फॉर एग्जाम्पल आप शुरू करते हैं, स्मॉलेस्ट होता है मिली, फिर होता है माइक्रो. ये इसमें सारे लेक्चर में, पहले लेक्चर में चीजें समझा चुका था, लेकिन आई एम जस्ट रिपीटिंग ऑल ऑफ दिस फॉर यू गाइस. तो माइक्रो को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नैनो, पिको, और फिर किलो, मेगा, गीगा, टेरा. 1 millimeter has 1 times 10 raised to the power of 3 meters. Sorry, minus 3 meters. 1 micrometer has 1 times 10 raised to the power of minus 6 meters. 1 nanometer has 1 times 10 raised to the power of minus 9 meters. And 1 picometer has 1 times 10 raised to the power of minus 12 meters. आप देखें 3 से वैल्यू इनकी बढ़ती जा रही है. 1 किलोमीटर में 1 times 10 raised to the power of positive 3 meters होते हैं. 1 मेगामीटर में 1 times the power of 6 meters होते हैं. 1 गीगामीटर में 1 times the power of 9 होते हैं, और 1 टेरामीटर में 1 times the power of 12 होते हैं. यार हम एक बहुत कॉमनली टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं, कितने मेगाबाइट्स है, कितने गीगाबाइट्स है, राइट? डेटा पैकेजेस में, वो मोबाइल फोन डिवाइसेस की स्टोरेजेस में, राइट? जी.
तो लेकिन हम वो क्या चीज होती है, वो ये बिट्स होती हैं जो कि आपकी स्टोरेज में स्टोर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी, जब जैसे हम किलोबाइट्स की बात करते हैं, तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1000 बाइट्स, राइट? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं एमबी में? 1000। 1 गीगाबाइट में, आप डू यू गाइस स्टडी कंप्यूटर साइंस? यस तो ये तो हमने पढ़ा होगा ना सब कुछ। 1 गीगाबाइट यस में 1000 बाइट्स होते हैं। ये वो चीजें, ये हमने इनको बस सिर्फ समराइज कर ली, क्योंकि चीजें फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज करनी है। 10 की पावर 3 हो जाएगा। सिर्फ मीटर से मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिखा, कुछ भी हो सकता है। बाइट्स की एग्जांपल्स ले ली हमने यहाँ पे, सेकंड्स की एग्जांपल्स ले सकते हो आप लोग। इसी तरह से इसका जब रिवर्स देखोगे तो मिली, माइक्रो, नैनो में चले जाएंगे हम लोग। यानी अगर 1 मिली बाइट लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें कितने बाइट्स होंगे? 1 टाइम्स -3 बाइट्स होंगे, यानी 0.001। एक बाइट का भी 0.00 इतना हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये बात हो रही है। अब ये आपको पता होना चाहिए ऑर्डर, कि सबसे बड़ा किलो, सबसे बड़ा यहाँ पे टेरा होता है, उसके बाद गीगा आता है, गीगा बाद मेगा, किलो, किलो के बाद आप फौरन आ जाएंगे यहाँ पे दरम्यान में सेंटीमीटर भी आता है, सेंट्री, जो भी व्हाटएवर, जो 10 की पावर 2 होता है। ठीक है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। फिर आएंगे हम लोग यहाँ पे मिली पे। मिली से छोटा माइक्रो होता है, माइक्रो से छोटा नैनो होता है, नैनो से छोटा पिको होता है। और ये आगे भी कंटिन्यू होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सब यही तक है। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, 5 energies are listed below: 5 kilojoules, 5 millijoules, 5 megajoules, 5 nanojoules. Small m is for milli and capital M is for mega. तो अब आप मुझे बताएंगे इनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? मैं आपको इनकी, आई कैन राइट डाउन दी स्टैंडर्ड फॉर्म्स। किलो में 10 की पावर 3 होता है, मिली में 10 की पावर -3 होता है, मेगा में 10 की पावर 6 होता है, और नैनो में 10 की पावर -9 होता है। तो which one is the smallest of all? नैनो नैनो। 5 नैनो तो यानी आंसर बी सही हो सकता है, सी सही हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद कौन सा आ रहा है? या तो किलो है या मिली है, ऑब्वियसली। ये हो गया तो मिली रह गया। ठीक है, 10 की पावर 3, तो आंसर सी सही है, मिली, किलो और मेगा। ठीक है, समझ आ गई? यस सर अच्छा, अभी क्योंकि क्लास का टाइम इज ऑलमोस्ट एंडिंग, तो आई एम गोइंग टू जस्ट कीप इट टिल हियर। ये जो लिंक है, ये आपने सारे क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हम इसी से हमारी, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया, तो हमारी यही प्रैक्टिस होगी कि आई कीप सेंडिंग यू गाइस क्वेश्चंस आफ्टर ईच टॉपिक। अच्छा, इसमें ये है कि आपके पास 3 कैटेगरीज है, इजी, मीडियम और हार्ड की, तो प्लीज इन तीनों को ट्राई करना। रोल 30 क्वेश्चंस बनेंगे, 30 एमसीक्यूज। ठीक है, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया, होमोजेनियस इक्वेशन बना। ठीक है, अभी आपको इस तरह के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यू गाइस, दिस इज योर असाइनमेंट, इजी, मीडियम, हार्ड के तीनों के 10 करने हैं। जो हमने कर लिए हैं वो भी कर लो। जस्ट कीप रजिस्टर विद यू व्हाइल यू अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस, क्योंकि ये हैं तो ऑनलाइन, लेकिन आपने इनको अपने साथ किसी रजिस्टर या किसी नोटबुक में करने हैं। जो आपकी नोट्स की बुक है, उसी के आखिर में टॉपिक की इन क्वेश्चंस को कर लेना, राइट डाउन ऑल दी आंसर्स। ठीक है, वो फिर हम लोग क्लास में एक साथ, इस तरह से है कि हम चेकिंग एक साथ कर लेंगे इनकी। आप लोग बस इनको अपने पास आंसर ऑप्शन लिखते जाना, वर्किंग बेशक साथ साथ करते जाना, ताकि बाद में कोई मसला हो तो वर्किंग को रेफर कर सकें। ठीक है, आई एम ठीक सेंडिंग दिस लिंक टू यू गाइस, यू नीड टू गेट दिस डन बाय टुमारो। मुझे आपने कल तक इनके आंसर ऑप्शन सेंड करने हैं। वी डोंट हैव अ क्लास टुमारो बिकॉज़ इट्स फ्राइडे। क्लासेस हमारी 4 days a week होंगी, मंडे टू थर्सडे। विल हैव आवर नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। मंडे से वी गोना स्टार्ट ऑफ विद दिस न्यू टॉपिक जो कि किनेमैटिक्स है। लेकिन वीकेंड पे ये आप तकरीबन फ्राइडे तक अभी सारे सवाल कर लो। फिर अगर वीकेंड पे हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ही मैं आपको इनके सॉल्यूशंस वगैरह सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, ओके सर चलें जी, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे देन। ओके, यू अल्लाह वेलकम हाफिज।